Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 4. Students, yesterday I told you that we would do the remaining 6 questions in the next lecture. So here we are. So आज हम बाकी 6 questions करने वाले हैं. So let's move on to the first question. What is it? Question G. What clues are there in the lines which tell us the stories were really good ones? What clues are there in the lines which tell us the stories were really good ones? Okay, I mentioned the lines first. They listened in awe, yet repeat them still. Now ये अलग लाइन है इसलिए मैंने यहाँ कॉमा लगाया और फिर पोइम की एक और लाइन जो कि इससे रिलेटेड है वही हम लिखेंगे yet repeat them still और फिर नेक्स्ट लाइन है those stories of gold. ठीक है, ये 3 लाइन्स ऐसी थी जिससे हमें पता चला कि बच्चे ये स्टोरीज़ बहुत अच्छी है जिसमें बच्चे इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, उनको फिर आगे बता भी रहे हैं, लोगों को अच्छी लगी पसंद आई तभी जाके हम उसको रिपीट करते हैं. जो चीज़ हमें पसंद नहीं आती अव्वल तो हम उसे सुनते नहीं हैं, अच्छा सुन तो ले तो फिर उसको बाद में रिपीट नहीं करते, सिर्फ यही कहते हैं बस बकवास सी स्टोरी थी. ठीक है, वही उसका इंट्रोडक्शन बन जाता है, वही वो स्टोरी बन जाती है, तो आगे हम उसकी डिटेल में नहीं जाते फिर. ठीक है, तो व्हेन वी रिपीट समथिंग अगेन एंड अगेन इट मीन्स इट वाज रियली इंटरेस्टिंग. ठीक है, तो दे लिसन्ड इन ऑ येट रिपीट देम स्टिल, मतलब खुद सुनते हुए डर लग रहा था उसके बावजूद उसको रिपीट भी करते थे, अच्छा सुनते हुए अच्छा लगता है फिर भी उसे रिपीट करते थे. तो ये एक और क्लू था जिससे पता चला कि द स्टोरीज वर रियली गुड. एंड द थर्ड थिंग इज दो स्टोरीज ऑफ गोल्ड, मतलब स्टोरीज ऑफ गोल्ड मतलब दे वर वेरी नाइस स्टोरीज, देयरफॉर द पोएट कॉल्ड देम स्टोरीज ऑफ गोल्ड. बहुत अच्छी स्टोरीज थी इसीलिए इनको स्टोरीज ऑफ गोल्ड कहा गया. ठीक है, इन तमाम लाइन्स से हमें पता चला कि these are the clues, these are the lines which show that stories were really good. I'm reading the answer again. They listened in awe yet repeat them still, those stories of gold are the lines which show that stories were really good. That stories were really good. They listened in awe, yet repeat them still. Those stories of gold are the lines which show that stories were really good. The next question is, do you think the stories were frightening? Do you think the stories were frightening? Why? Yes, the stories were frightening because the children listened them in awe. The children listened them in awe. Now the feeling, it's a kind of feeling which take place in fear. जब आप थोड़ा सा खौफ महसूस कर रहे होते हो तो वहाँ उस काइंड की फीलिंग को हम कह सकते हैं कि the children were listening in awe, like they were looking at the picture in awe. So the answer is yes, the stories were frightening because the children listened them in awe. ठीक है, फ्राइटनिंग थी तब जाके वो मतलब इस तरह खौफ की फीलिंग के साथ उसको सुन रहे थे और इन्जॉय भी कर रहे थे. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द स्टोरी टेलर वॉज अ गुड स्टोरी टेलर? वाई? डू यू थिंक द स्टोरी टेलर वॉज अ गुड स्टोरी टेलर? वाई? Yes, he is good because he tells moral stories. अच्छा, मेरे ख्याल में वो अच्छा इंसान इसलिए क्योंकि एक तो वो मॉरल स्टोरीज सुना रहा है. मॉरल स्टोरीज़ का मुझे कहाँ से पता चला कि वो मॉरल स्टोरी सुना रहा है? एक तो फेबल्स से पता चला कि फेबल स्टोरीज़ ही ऐसी होती हैं जिसमें कोई सबक होता है,
कोई हमारे सीखने के लिए कुछ होता है उसमें, तो उसको फेबल्स कहते हैं। तो वो फेबल्स सुनाता था, एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.